Guys, welcome you again. So today we are starting the new topic, differentiation of chapter number 5 of class 12, that is continuity and differentiability. So let's see what is differentiation. We have learned differentiation in class 11th also. In class 11th we have learned it by a name, derivatives, right? तो वहाँ पे हमने first principle and direct differentiation two topics learn किए थे. So let us start. Differentiation is a method of compute the rate at which a dependent variable y changes with respect to a independent variable x. So basically differentiation क्या है? It defines as a rate of change of any variable with respect to another variable. जैसे आप just for example if you are writing dy by dx, so it means rate of change of y with respect to x. Here y is dependent variable and x is independent variable. Okay, so derivative of a function. Let fx be a function differentiable on the interval, then derivative or differential coefficient of a function y is equal to fx is defined as, you can write derivative of a function like dy by dx also, we can write that by f dash x also, we can write that by y dash also. और उसको define कैसे करते हैं? Limit x tends to 0 fx plus delta x minus fx upon delta x. So this is the first principle which we have learned in class 11th. ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ही आपके पास फॉर्मूला है. द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स इज रिटन एज एफ डैश एक्स. सो वी कैन ऑल्सो राइट द डिफरेंशिएशन बाय एफ डैश एक्स ऑल्सो, वेयर इट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप? एफ का कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ऑल राइट, तो ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व. अगर आप ज्योमेट्रिकली बात करें तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा? डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. कोई भी अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो उस कर्व पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दैट विल बी द, उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन. सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट द वैल्यू एफ डैश एक्स ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए. ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद यू कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू, देन दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन. All right, so here I have represented it by f dash a or dy by dx at x equals to a. Now let us see what is the geometrical meaning of derivative. So let us consider a function fx and the corresponding curve y is equal to fx. So let us see what is geometrical meaning of derivative. Let us now consider the function y is equals to fx and the corresponding y is equals to fx. ठीक है, तो क्लियरली लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई. ओके, सो लेट अस सी इन द फिगर व्हाट इज द फिगर रिप्रेजेंट्स. नाउ हेयर इट इज़ द कर्व, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है आपके पास, राइट? और इस पर से एक टेंजेंट जा रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन विच इज कमिंग हेयर. तो टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, नाउ वी नो दैट स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट इज इक्वल्स टू टेन थीटा. ओके, स्लोप जो होता था वो हमारे पास क्या होता था? टेन थीटा. और थीटा इज द एंगल मेड बाय द line with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. ठीक है, so here also here हमारा जो dy by dx होगा, right, at dy by dx will be representing tan theta, it means slope of the tangent to the curve. Okay, so tan alpha हम slope determine करते थे tan alpha से. alpha is the angle made by positive x axis in anti-clockwise direction, and this is equals to what? This is equals to the differentiation. All right, so which means that slope of tangent at any argument is equal to the value of derivative at that argument. All right, now let us see some standard derivatives which will be useful in this chapter. First, dy by dx of x की power n. So we all know that dy by dx of x की power n is nx n minus 1. Okay, similarly dy by dx of 1 upon x की power n, it will be minus nx raised to the power minus n minus 1. And then third, root x का differentiation is 1 by 2 root x. Next, exponential functions में e की power x का e raised to the power x will be the answer. Differentiation of a की power x, it will be a की power x log a. All right. Next, logarithmic functions when we are having log x whose base is e, so answer will be 1 by x. And if we are having a log x whose base is a अदर देन ई के अलावा कोई भी बेस होगा तो व्हाट विल बी द आंसर? 1 अपॉन एक्स. आप इस बेस को कहाँ ले आएंगे? इसके साथ लॉग ए. ऑल राइट, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स,
and cosec x is minus cosec x tan x. Similarly, cos x का minus sin x and cot x minus cos square x. All these formulas can be determined by using first principle. This we have learned in class 11. Now let us see, there are some rules for the differentiation. The derivative of constant function is always 0. Means अगर आप किसी भी function का differentiation कर रहे हैं and it is a constant function, just for example अगर number है, right, तो उसका constant का differentiation will be 0. Next, derivative of the constant times a function is constant time the derivative of function. Means you are having c dot fx. तो अगर इसका differentiation करेंगे तो this c will come out and differentiation of fx will be there. तो f dash x हो जाएगा, बाकी c will remain as it is. Similarly, third point, the derivative of sum or difference of two functions is the sum or difference of their derivatives. Means fx plus minus gx अगर आप derivative कर रहे हैं तो this d by dx will be distribute on both the fx and gx. Similarly, next come to the product rule. Product rule में क्या होता है? We are having two functions of x in multiplication. तो product rule states that first को रखिए second का differentiation, then keep second as it is, first का differentiation. तो fx dot d by dx of gx plus gx dot d by dx of fx. Okay, so first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Similarly, if we go to the quotient rule, now in quotient rule what we are having? The derivative of the quotient of two functions. Now we are having two functions in division. So first of all we'll keep denominator as it is, numerator का differentiation. Then we'll keep numerator as it is, denominator का differentiation, and then denominator का whole square. So this is quotient rule. All right. Now let us start with some example. Now example number 1 is y is equal to x raised to the power 1 by 3 plus x raised to the power 1 by 2, and we have to find dy by dx at x equals to 81. Okay, so first of all we will find the dy by dx of this equation. So x raised to the power 1 by 3 का differentiation will be 1 by 3 x की power minus 2 by 3. Power will come here and 1 will be subtracted. Similarly here also power will come forward, 1 by 2 and x raised to the power minus 1 by 2. So like this we can do the differentiation. Okay, we have done the differentiation like this. Now we have to put 81 in this. तो हमने 81 put किया at place of x. Now we will simplifying it. So 81 can be written as 9 square. So square and 1 by 2 will be cancelled out. So it will be 9 raised to the power minus 1. And 9 raised to the power minus 1 can be written as 1 upon 9. That's why this term become 1 upon 18. Now let's take this term. So 81 can be written as 3 raised to the power 4. And power पे power है तो it will be multiplied. So it will be 3 raised to the power minus 8 by 3. Here we are also having 1 3. तो ये 3 अगर ऊपर आएगा numerator में तो it will be 3 raised to the power minus 1. Okay, and base same, then power will be added. So we are getting 3 minus 11 by 3 plus 1 by 18 as our answer. Moving on to second example, y is equal to sin x upon 1 plus cos x. Now again we have to find dy by dx. So here we are getting two functions of x in division. हमको u by v दिख रहा है, तो means quotient rule will be applied. So moving according to the quotient rule, we are having denominator as it is, differentiation of numerator, minus numerator as it is, differentiation of denominator, divided by denominator का whole square. Okay, so by simplifying it we will get the answer 1 upon 1 plus cos x. So these are two examples based on the rules of differentiation. Let's come to the next, derivative of a composite function, chain rule. Now this is also an important rule in differentiation. If y is differentiable function of t and t is a differentiable function of x, so y is equal to ft, it can be written like this, and t is equal to gx. So अगर हम dy by dx लिखेंगे तो वो क्या होगा, dy by dt and dt by dx. तो if dt and dt will be cancelled out, तो ये dy by dx ही बचेगा आपके पास. Right, let us take an example again. Derivative of root e की power root x. Now according to the chain we will do the differentiation जो हमको सबसे पहले दिख रहा है. तो सबसे पहले we can see the root. तो root का differentiation होता है 1 upon 2 root. Then it is clear कि हमको e दिख रहा है. e की power x का होता है e की power x. तो यहाँ पे e की power क्या है, root x. That's why differentiation will be e की power root x. Then हमको root x भी दिख रहा है. तो root x का differentiation क्या होता है, 1 upon 2 root x. Okay, now we'll arrange in this manner. Just have a look. Now let's see what we have done. So we have done the differentiation of root first of all, 1 by 2 root, then e की power root x का e की power root x, and then root x का 1 upon 2 root x. Then we have arranged all these terms. So we have get this answer. Alright. Next, moving on to the parametric functions. Now if an x and y are separately given as function of a single variable,
t, अगर x और y आपके दोनों सिंगल वेरिएबल में हो t में, then what you have to do now? So let's see what we will do. Let's take an example. Find dy by dx is x is equals to 380 and y is equals to 380 square plus upon 1 by 1 plus t cube. Now हम x का डिफरेंशिएशन सेपरेटली कर लेंगे और y का डिफरेंशिएशन भी सेपरेटली कर लेंगे in terms of t with respect to t. Okay, so if I start with x है हमारे पास 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, राइट. तो हमने इसको 380 को ऐसे लिखिए t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब. नाउ दिस इज u बाई वी. अब इस u बाई वी को हम u बाई वी से सॉल्व करेंगे, तो u बाई वी से सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग दिस आंसर. एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ y 3a इज कॉन्स्टेंट, तो 3a को साइड में कर लिया एंड वी हैव डन द डिफरेंशिएशन ऑफ रिमेनिंग पार्ट में भी u बाई वी अप्लाई हो रहा, तो u बाई वी अप्लाई करके वी हैव गॉट दिस आंसर. नाउ फॉर dy by dx, what will be the dy by dx? It will be dy by dt upon dx by dt, means this divided by this. So we will get this as my answer. Okay, so in case of parametric function, what you have to do? You have to do the differentiation of x separately and y separately, and then divide differentiation of y upon differentiation of x. You will get your answer. Next, moving on to the implicit function. Now what is implicit function? If independent variable x and dependent variable y occur together in an equation. अब आपको एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स मिल जाएंगे, x भी और y भी. Then it is not convenient or possible to express y in terms of x. In such case, we say that y is an implicit function of x and both are connected by relation. तो ऐसी इक्वेशन एक मिल जाए जिसमें हम y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, दैट फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. तो ऐसे फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? लेट्स सी. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड dy by dx, we adopt the following procedure. Differentiate each term of x y with respect to x, noticing y as a function of x. आपको सबको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रेस्पेक्ट में. Simplify the equation thus obtained for dy by dx. So let us see how we can do that. So I am taking an example. If x square plus 2xy plus y cube is equals to 42, then dy by dx is equals to what? So हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. ओके, 2 विल रिमेन कॉन्स्टेंट. एक्स वाई इज इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स. ओके, सिमिलरली वाई क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. ऑल राइट, अब आपको कुछ नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए एंड रिमेनिंग टर्म्स को आप यहाँ राइट में शिफ्ट कर दीजिए. यू विल गेट दिस एज योर आंसर. ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट exercises. Thank you.